start. In view of the above, the first question is answered against the petitioner's stop. It is held that the sale and purchase by the exporter are exempted. Stop. The sale by the exporter is exempted by virtue of the provision in clause 1 and the purchase is covered under clause 3 of section 5 stop. Any transaction preceding the purchase of rice by the exporter is not treated as a sale or purchase in the course of export of goods stock. Thus, it is not covered by the provision for exemption from the levy of tax under the statute. Stop. Mr. Sareen contended that constitutional issues are involved. Stop. In view of the decision of their lordships of the Supreme Court in Pardeep Port Trust versus Sales Tax Officer and other 11, the remedy of appeal, etc., can be no bar to the maintainability of the rate petition. Stop. He also submitted that the orders of provisional assessment, copies of which have been produced on record, are unfair. Stop. Mr. Surekant, on the other hand, submitted that the impugned orders have been passed under section 28B of the Act. Stop. The petitioners have a statutory remedy under sections 39 and 41 of the Act. Stop. In any event, the Advocate General stated on instructions from Mr. S.K. Yadav, Joint Director, Legal, that in case the petitioners file an appeal within the time that may be granted by the court, the state shall not raise the objection regarding limitation. Stop. It is undoubtedly true that the existence of an alternative remedy is not an absolute bar to the maintainability of a petition under Article 226 of the Constitution. Stop. It is also correct that when the wires of a statute are involved or an issue of constitutional importance arises, the citizen may be normally entitled to invoke the jurisdiction of this court under Article 226. Stop. However, in matters involving facts and an investigation into transactions, the rate court has an apparent handicap. Stop. Normally, it cannot record evidence and given finding on questions of fact. Stop. These have to be variably determined by the authorities under the statute. Stop. It is only when an order passed by a quasi judicial authorities suffers from an error apparent on the record or is in violation of a statutory provision that the court intervenes by the issue of a writ of certiorari. Stop. In the present case, the correctness
or otherwise of the returns filed by each of the petitioners has to be determined. Stop. It may require appraisal of records for different years. Stop. This matter cannot be dealt with in proceedings under Article 226 of the Constitution. Stop. In any event, the purely legal issue having been decided, the matter should now be examined by the appropriate authorities under the statute. Stop. In this situation, we direct that in case the petitioners have any grievance against the orders of provisional assessment, they would be entitled to file an appeal within 30 days from the date of the receipt of a certified copy of this order. Such an appeal is filed, it shall be considered and decided by the appropriate authority under the statute on merit. Stop. It shall not be rejected on the ground of limitation. Stop. Hi student, डिक्टेशन लिखने के बाद उसको टाइप करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताते हैं। जैसे आप इसमें डिक्टेशन लिख लेते हैं तो इस विंडो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इस टाइप से विंडो नजर आएगी। इसमें विंडो के राइट साइड पे स्किप टू ट्रांसक्राइब वाली ऑप्शंस आपको नजर आ रही है, इस पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको लॉगिन वाला विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें लॉगिन नहीं करना है, साइन अप करना है। साइन अप पे जैसे क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट आ जाएगा। क्रिएट अकाउंट में आपने फुल नेम, ईमेल, ईमेल आप अपनी सही ईमेल डालिए, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद क्रिएट अकाउंट कर दीजिए। उसके बाद आपकी ईमेल पर वेरीफाई योर ईमेल उसका लिंक ओपन हो जाएगा। इस पे आप जाके क्लिक करें। क्लिक करते ही तो कंटिन्यू की ऑप्शन आ जाएगी। कंटिन्यू पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद लॉगिन वाली ऑप्शन आती है, इस पे साइन इन करना है आपको। साइन इन करने के बाद ट्रांसक्राइब हियर वाला विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे टाइमर है, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप टाइम से पहले टाइप कर लेते हैं तो नीचे ऑप्शन है सबमिट अटेम्प्ट, उस पर क्लिक करो, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको सबसे पहले एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कितनी एक्यूरेसी से आपने टाइप किया। नेक्स्ट विंडो है फुल मिस्टेक, कितनी मिस्टेक आपने की, हाफ मिस्टेक्स कितनी है, और एरर टोटल कितने हैं और कितने वर्ड आपने टाइप किए। और नीचे आपको ग्रीन में दिखा रहा है, ग्रीन ये जो करेक्ट वर्ड है, रेड वाला जो है आपकी मिस्टेक है। इसके बाद नीचे एरर ब्रेकडाउन वाली ऑप्शन आती है, इसमें आपको सारा डिक्टेशन के बारे में बता रहा है। ओमिट वर्ड्स, मिसिंग वर्ड्स, एडिट वर्ड्स, सब्स्टिट्यूट वर्ड, ये सब दिखाता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस है व्यू लीडर बोर्ड की। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको डिक्टेशंस योर परफॉर्मेंस की ऑप्शन दिखाता है, आपका कितना रैंक है और एक्यूरेसी कितनी है। ये जितने भी बच्चों ने इसको टाइप किया वो उनमें आपका रैंक डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद हमारे पास व्यू ट्रांसक्रिप्ट पीडीएफ की ऑप्शंस है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको विद शॉर्ट एंड मैटर जो डिक्टेशन का मैटर है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी आपने डिक्टेशन है इसमें अटेम्प्ट की हैं उसका विद ग्राफ आपको डिस्प्ले करेगा। थैंक यू।